the News Laundry does this survey every year, I think every 2 years, with Oxfam on the caste in newsrooms. And most years we see that nothing much changes. That it is people of upper caste, mainly males, who are editors of news organizations. And if it is females and they're upper caste females, like I am one, therefore the diversity in media has not been growing too much. So for me, an environment where regardless of your gender, experience, your background, if you're able to, respect each other's opinion, everybody should get like a equal opportunity to progress in your career. For me, that is a diversity, right? Because it is actually a business case. कौन से रिलीजन का आप ज़्यादा फेस्टिवल दिखाते हैं टीवी पे, वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ज़्यादा दिखा रहे हैं इसका मतलब है आपने किसी को चुन लिया है कि आपको किसको प्रेफरेंस देना है. तो मेरे हिसाब से सिर्फ इंटरनली मीडिया हाउसेस में डाइवर्सिटी पर चर्चा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अराउंड दुनिया है उसकी डाइवर्सिटी को भी आपको समझना पड़ेगा कि आप किसको कितना स्पेस दे रहे हैं. If you are able to say, for example, ensure some sort of diversity and intersectionality at, say, junior reporter level or reporter level, but if your leadership is really not diverse, then it's really not going to make a difference, because newsroom cultures, we know, or cultures of any workspace are maintained and sustained from the top. So if you are not diverse and intersectional at the top, not much is going to change. हजारों स्टूडेंट एक होप लेकर निकलते हैं कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, अब आगे जाके हम लोग किसी बड़े मीडिया हाउस में काम करेंगे. लेकिन होता क्या है, कहाँ जाते हैं वो लोग, क्यों नहीं आ पाते मीडिया हाउस में, कौन सा फिल्टर है कि उनको रखा नहीं जाता. जो लिपा पोती के लिए रख भी लिया जाता है तो उन लोगों को रखा जाता है छोटी छोटी पोजीशन पे, और जब रखा जाता है अगर वो उनकी मर्जी से काम करते हैं तो ठीक है, तुम टिके रहोगे. जहां तुमने बोलना शुरू किया वहां से निकाले जाओगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. ये हो रहा है मीडिया में. Thank you, everyone. So the first session of the Media Rumble kicks off on a very important topic. Two disclosures. First, I have a very bad cold. And second, my Hindi is a bit rusted, but I insist on speaking in Hindi at times. So please do bear with me. I have, in fact, shared quite a few stages with Gunjan and Meena on the same topic. We have spoken about this for at least 2-3 years on different panels. So first, I would like to start by asking each of you your quick comment on what diversity in media means to each of you, and how do you think that is important? To show the diversity, I will speak in Hindi. हाँ, ठीक है. हाँ. तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिटी इन मीडिया जो है वो डिपेंड करता है कि डाइवर्सिटी इस कंट्री में जो है वो मीडिया शो करता है या नहीं. हम कहते हैं ना कि आजकल आपने देखा होगा कई सारे सर्वेज आ रहे हैं, कास्ट सेंसस टाइप चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें बार बार बातें होती हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी. बट मेरा मानना है कि वो इम्पॉर्टेंट है, बट आप जब मीडिया में आप सोसाइटी के डाइवर्सिटी को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, आपको मुस्लिम भी चाहिए, दलित भी चाहिए, ओबीसी भी चाहिए मीडिया में, जर्नलिज्म में, लेकिन आपके सोसाइटी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप नहीं दिखाते हैं. जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका मीडिया जो खबरें दिखाता है वो किसकी ज़्यादा दिखाता है. जब आप अखबारों में देखते होंगे या चैनल्स पे देखते होंगे तो कौन से रिलीजन का आप ज़्यादा फेस्टिवल दिखाते हैं टीवी पे, वो इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ज़्यादा दिखा रहे हैं इसका मतलब है आपने किसी को चुन लिया है कि आपको किसको प्रेफरेंस देना है. तो मेरे हिसाब से सिर्फ इंटरनली मीडिया हाउसेस में डाइवर्सिटी पर चर्चा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अराउंड दुनिया है उसकी डाइवर्सिटी को भी आपको समझना पड़ेगा कि आप किसको कितना स्पेस दे रहे हैं. तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिटी को दोनों तरफ से देखना होगा. ठीक है. मीना. थैंक यू धन्या. मैं भी शादाब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी, और इस उदाहरण से हम लोग यहीं से शुरू करते हैं. यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कैसा होता अगर एक ही तरह के लोग बैठते, सारे मेल ही होते या सिर्फ सारी महिलाएं ही होती, तो कितना ख़राब लगता. और हम लोग डाइवर्सिटी पे बात करते, या फिर आप हमारा पैनल ही देख लीजिए कि कैसे अलग अलग लोग हम लोगों ने रखे हैं पैनल में भी. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जिसका दर्द है
या जिसकी जो बात है वो खुद कहे तो उतना उस पावरफुल से कह सकेगा। मैं सबके बारे में नहीं बता सकती या आप सबके बारे में नहीं बता सकती। जिसका अंकुर है, अंकुर अपने बारे में बताएंगे, मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा हाथ कटा है तो मैं बताऊंगी मुझे कितना दर्द है, कोई और क्यों बताने आएगा कि मुझे कितना दर्द है। तो इसीलिए हमें डाइवर्सिटी भी देखना चाहिए। वो न्यूज़ रूम में इसलिए होना चाहिए कि एक ही तरह के लोग होंगे, इसीलिए एक तरह की खबरें आ रही हैं, एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्यों जो है मीडिया जो है आज 161 रैंक पर पहुंच गया है, वहाँ का कारण भी यही है क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं देखी गई। अगर डाइवर्सिटी होती तो इतनी बुरी स्थिति में आज मीडिया नहीं पहुंचा होता। तो इसलिए हम लोगों को सब तरह के लोग चाहिए, महिला भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए, उनमें भी अलग अलग लोग चाहिए। महिलाएं कौन कौन से तबके से आती है, कौन कौन से वर्ग से आती हैं, वो दलित भी हो, आदिवासी भी हो, पुरुष भी हो, क्वेयर कम्युनिटी से भी हो, ऐसे ही सभी तरह के लोग होने चाहिए। पुरुष में भी ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि सबका अलग अलग एक स्ट्रगल होता है, सबकी अलग अलग बात रखने का तरीका होता है, सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। हम किसी एक को नहीं मान सकते कि उसी के पास सब कुछ होगा, उसी की जो स्टोरी है वो सबकी हो सकती है। इसीलिए डाइवर्सिटी जरूरी होती है। Thank you, Meena. So before I go to Gunjan, I just want to say that the News Laundry does this survey every year, I think every 2 years with Oxfam on the caste in newsrooms. And most years we see that nothing much changes, that it is people of upper caste, mainly males, who are editors of news organizations. And if it is females and they're upper caste females like I am one, therefore the diversity in media has not been growing too much. I'll go to Gunjan next. Gunjan is from Google. Gunjan, tell me, what does diversity mean for you and how do you think that will be able to bring about change? So for me, Dhanya, like I'm not a content expert, right? But I see diversity more as a business case. How organization can, leverage that, right? So for me, an environment where regardless of your gender, experience, your background, if you're able to, respect each other's opinion, everybody should get like a equal opportunity to progress in your career. For me, that is a diversity, right? Because it is actually a business case. So how you are producing a very inclusive content by having different viewpoints in your content, I think on the business side, it's more like that, how innovative you are. What are your positive outcomes because of diverse representation? So for me, it's on the business side actually. And there is enough research to show that Absolutely. a diverse news organization actually makes the best business case because you speak to a lot more audiences, because you, like Meena was saying, a person with a lived experience can speak a story perhaps better than someone without that lived experience. I'll come to lived experiences and whether people only with those experiences can cover those stories. Ankur? So diversity, for me, I mean, when you're speaking last on a subject, everybody has covered everything before you. So I don't have a lot to add, but I'd say that we cannot talk of diversity without really talking of intersectionality, because that is how we exist in society. And to me, diversity and intersectionality really boils down to, in a media space, is that people who are reading our news or watching our news, are they able to see themselves in the stories that they are reading, in the stories they are watching? And this diversity and intersectionality needs to be really reflected at all levels. At the leadership level, at the mid-level, at the reporter level, because if you are able to say, for example, ensure some sort of diversity and intersectionality at, say, junior reporter level or reporter level, but if your leadership is really not diverse, then it's really not going to make a difference, because newsroom cultures, we know, or cultures of any workspace are maintained and sustained from the top. So if you are not diverse and intersectional at the top, not much is going to change. Another thing, just coming back to people seeing themselves in the stories that you're writing, is that if you leave people who live on the margins, if you leave them, they will leave you. Always remember that. Thank you. So this time I'll start with you so that you will have a lot more points than the others. Ankur, I want to ask you, we have had several such conversations, right? I'm pretty sure that you have also sat on panels on discussions. Do you really believe there has been any change
or has whatever change come been cosmetic? Yeah, so I won't say that there is no change. There has been some change, but the question we need to ask is that where is this change happening and who is leading this change? I feel like the conversation of diversity, equity, and inclusion keeps happening in spaces like this. It's in the echo chambers that we speak about diversity, equity, and inclusion, and keep feeling happy about it, that, look, I have done this, look, you have done that. But if you really move outside, TV has gone to dogs anyway, so I won't talk about it. But say regional media, Hindi language media. I come from a very small town in UP, Aligarh, where the local newspaper that my family or people in the neighborhood get, the news or the headlines, the news on the front page are still the same. I still do not see stories of LGBTQ plus community, talking about just my community, on the front page. And not at all, actually. I still feel very invisible in the stories that are being told in the local media. I know I have friends in these local media spaces, and I know the newsrooms there, things have not changed. So really what we need to ask is that, where is this conversation actually happening? And when you talk about cosmetic changes, I'll come back to the point about leadership again, is that, is the change happening at the leadership level? If it's not, it is cosmetic. Meena, I want to take over from what he said. हम लोगों ने बहुत ऐसे पैनल्स में बैठ चुके हैं जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि कोई, last year we were both in a panel in Patna where we spoke at the NWMI, which is the Network of Women in Media, where Meena made a very strong case of why she feels that there is not enough diversity. But do you believe that despite all this, there is actually any change happening? And like Ankur was saying, it's still not happening at the leadership level. It's happening beneath in the hierarchy. So we are always talking about equality, not equity in newsrooms. धन्या, बिल्कुल चेंज की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट से हम लोग शुरू करते हैं। 2019 में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी उसमें 88% जो है लीडरशिप सवर्णास के हाथ में थी। फिर अभी पिछले साल जो रिपोर्ट आई उसमें क्या चेंज हुआ, 90% हो गया। तो चेंज तो हुआ, लेकिन क्या चेंज हुआ हमें ये देखना है। हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी रखो रखो रखो, लेकिन किन के ऊपर असर हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। वो तो 90% हो गया, बल्कि हमारे कहने का और उल्टा हो रहा है। और मैं कल बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी, तो चेंज क्या हो रहा है। कल हम लोग जब लास्ट टाइम रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो कितना ही चेंज आया, किस लेवल पे दलित आदिवासियों को रखा जा रहा है और क्यों नहीं रखा जा रहा। हर साल, मैं पिछले साल भी यही बात बोल रही थी कि हर साल जो है हर इंस्टीट्यूट से हजारों लोग निकलते हैं, हजारों स्टूडेंट एक होप लेकर निकलते हैं कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, अब आगे जाके हम लोग किसी बड़े मीडिया हाउस में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, कहाँ जाते हैं वो लोग, क्यों नहीं आ पाते मीडिया हाउस में? ऐसा कौन सा फिल्टर है कि उनको रखा नहीं जाता? मेरिट 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 पर हम लोग बात करते हैं, वो कौन सा मेरिट है कि यहाँ पर जिनकी आबादी, अगर मैं 2011 के आंकड़े से लूँ तो 16 लगभग 17% जो है दलितों की रही है, ठीक है। तो इसमें क्या उन लोगों को मिल ही नहीं रहे? वो लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो लोग कौन सा फिल्टर है कि भाई उनको रखा ही नहीं जा रहा है? और जब आप शुरुआत में नहीं रखेंगे तो लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों हम लोगों को मूक नायक शुरू करना पड़ा? ये हमारा कोई शौक नहीं था मूक नायक शुरू करने का। मेरा भी मन था मैं कहीं पे नौकरी करूं, लाखों की कमाई जो मुझे मिले और अच्छी खासी सैलरी से पाके मेरा घर परिवार चले। क्यों इतना टेंशन हम लोग लें? ये एक मजबूरी में हम लोगों ने मूक नायक शुरू किया कि आप नौकरी नहीं देंगे तो हम अपना इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे और हम दिखाएंगे कि मीडिया कैसे काम करता है, न्यूज रूम में कैसे काम होना चाहिए। हम लोगों ने एक छोटी टीम में जो है डाइवर्सिटी रखी। क्यों छोटी सी टीम है, उसमें दलित है, आदिवासी है, क्यूर है, मुस्लिम है, पशमानदा है, महिलाएं हैं, सब लोग हैं, ओबीसी है, इवन सवर्णा भी हैं। तो जब छोटी सी टीम में हम लोग डाइवर्सिटी दिखा सकते हैं तो बड़े बड़े मीडिया हाउस क्यों नहीं दिखा पाते? अगर आप कहते हैं मेरिट, मान लिया मेरिट नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी मान लिया कि भाई मेरिट है ही नहीं, वो लोग ऐसी ऐसी जगह से आते हैं, उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं होता कि वो लोग सीख नहीं पाए हैं। लेकिन उनको सिखाने के लिए किया क्या?
जो आज मैं अभी कह रही हूँ 180 देशों में से 161वें पोजीशन पर अगर इंडिया चला गया है तो वो क्यों गया है? जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, वो उनका शौक होगा क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर जर्नलिज्म उस तरह से नहीं किया, जगह नहीं दी। क्यों नहीं जगह दी? क्यों? उनको सवाल पूछना हमें पड़ेगा। हम सवाल पूछेंगे तभी वो शायद, क्योंकि मोटी चमड़ी के लोग हैं, नहीं सुधरेंगे, लेकिन हम लोग उनको दिखाएंगे तो सही कि देखिए आप लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से मीडिया आज इस स्थिति में है। आप लोगों ने कितनी कमी रखी है। अभी आईआईटी में हम लोग देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं सुसाइड वाले मामले आ रहे हैं। मैं जब ये रिपोर्ट देख रही थी तो कल जब रिसर्च कर रही थी तो आईआईटी का मैं बताती हूँ। आईआईटी में 98% जो फैकल्टी है वो अपर कास्ट है। मतलब फैकल्टी में कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें दलित आदिवासी है ही नहीं। अगर मैं दिल्ली का ही देखूं तो दिल्ली में ही 24 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर एसटी नहीं है, 15 ऐसे हैं जहां पर एससी नहीं है, 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ओबीसी नहीं है। मुंबई का भी यही ऐसा ही इतना ही बुरा आंकड़ा है। इसी तरह के हाल है। जब आप टीचर्स नहीं रखेंगे, जब आप ऐसे एडिटर्स नहीं रखेंगे तो किससे आप गुंजाइश कर रहे हैं कि वो आपकी बात कहेंगे? हम लोग कैसे माने कि वो हमारा दर्द कहेंगे? महिलाएं हों, दलित हों, आदिवासी हों, क्यों एक पानी छूने की वजह से उनको मार दिया जाता है? मीडिया रूम में दिखाया जाता है कि घड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह से कास्ट एग्जिस्ट करती है। आज वो लोग जो है बैठे बैठे दिखा रहे हैं कि आज जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, नहीं। लेकिन दलित आदिवासियों के पास तो ये मौका ही नहीं था। कभी उनको बोलने दिया ही नहीं गया, कभी उनको मौका ही नहीं दिया, उनको कभी माइक ही नहीं दिया, कभी आपने न्यूज रूम में उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाया। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि जो लिपा पोती के लिए रख भी लिया जाता है, तो उन लोगों को रखा जाता है छोटी छोटी पोजीशन पे, और जब रखा जाता है अगर वो उनकी मर्जी से काम करते हैं तो ठीक है, तुम टिके रहोगे। जहां तुमने बोलना शुरू किया वहां से निकाले जाओगे, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये हो रहा है मीडिया में। Like I said, Meena always makes a strong case, but every time, my regret is that every time this conversation happens, and like she pointed out, there seems to be no real progress by the next year. We go back to the same figures, the same statistics. Shadab, 2 important things that she said. One is that why did she have to start an organization like the Mook Nayak? Because the representation within the mainstream media was not progressing, right? So Mook Nayak is not the only example. We see a lot of magazines, websites started by people from queer communities, Dalits, Adivasis. So are we actually forcing people from the mainstream media to work in silos? One. And second, what she pointed out about people not being in leadership positions, that it's not enough that you take people into the newsroom, but you're not giving them any leadership position. 2 सवाल, दोनों का जवाब इस तरह से है कि जो पहला पॉइंट है मीना का, कि आपको वो इन्वायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से आप खुद का मतलब एक स्टार्टअप शुरू करते हैं या आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं। बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि मीडिया डाइवर्सिटी और मीडिया प्लूरलिज्म, बेसिकली आपको एक सेम पैटर्न पे एक नई चीज़ें खड़ी हो रही है। उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को बांट दिया है। और जहाँ तक एग्जैक्टली जो जितने भी डेटा हैं, चाहे 2022 का डेटा हो ऑक्सफैम का और न्यूज़ लॉन्ड्री का जो डेटा था, उसमें भी 88% 90% जो है वो अपर कास्ट मीडिया को रूल करते हैं, आप इस तरह समझ लीजिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको शुरू करना मजबूरी में पड़ता है, दूसरा इन्वायरमेंट नहीं देते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई मीडिया खड़ा होता है तो उसको आप बहुत जल्दी लेबल करते हैं। दलित थॉट प्रोसेस का एक आइडियोलॉजी का मीडिया खड़ा होगा तो आप उसको तुरंत ही साइड लाइन करेंगे कहकर कि अरे ये तो सिर्फ दलित की बात करता है, साइड करो। दूसरा, अगर इन केस कोई मुस्लिम वेबसाइट खड़ी होती है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, मतलब उसका ओनरशिप मुसलमान के हाथ में हो और वो थोड़ा मुस्लिम फोकस्ड स्टोरी करता हो, तो आप उसको साइड लाइन करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को आप खारिज करते हैं कि अरे वो तो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। तो जिसकी वजह से आपको अपनी और आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि आप मेरे एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि चेंजेस जो हैं आए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ इसका मतलब है चेंजेस आए हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। दूसरा ये कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में मीडिया डाइवर्सिटी कैसे नहीं है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में एक टर्म कॉइन किया गया, थूक जिहाद, स्पिट जिहाद। वो क्यों निकला? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि
आपका जो दूसरा कम्युनिटी है जिसके साथ आप रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इतने सालों से, उसके यहाँ थूकना जो है वो आपको इम्प्योर माना जाता है। वो थूकना उसको पसंद नहीं है। वो थूकी हुई चीज़ों को, अगर आपका थूक सलाइवा अगर आपके अंदर है मुंह में तब तक ठीक है, लेकिन वो बाहर आ गया तो इम्प्योर है। एज मतलब अगर मुसलमानों की बात करें तो आपको ये पता नहीं था, इसलिए आपने एक पूरा नैरेटिव सेट किया कि आप थूक जिहाद होता है, मुसलमान थूकता है। ऑब्वियसली वो नहीं थूकेगा ना, आपको पता नहीं है, उसके कल्चर के बारे में पता नहीं। उसी तरह से मुझे अगर आप कहें कि क्रिश्चियंस के कई सारे कल्चर होंगे जो मुझे नहीं पता है, फैक्ट है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने उस डाइवर्सिटी को उस तरीके से जीने की कोशिश ही नहीं की। उसका इम्पैक्ट मीडिया पे अभी दिखता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की वजह से कंट्री की डाइवर्सिटी पता नहीं चल पा रही है। मीडिया बार बार आपको सिर्फ एक ही नैरेटिव, एक ही थॉट प्रोसेस, एक ही सोच, एक ही आइडियोलॉजी में बांध के रख रहा है, जिसकी वजह से मीना को या मीना जैसे और लोगों को एक अपना एक अलग खड़ा करना पड़ता है। ये एक सवाल का। दूसरा सब क्वेश्चन आपका क्या था? लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप पोजीशन। ऑब्वियसली लीडर जब हम बेसिक लेवल पे ही शुरुआत नहीं करेंगे, हमें मौका ही नहीं मिलेगा। आप जब हायरिंग होती है, क्योंकि मैं हायरिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि हमें, क्योंकि हमने वो झेला है तो हमें पता है कि हमें हायरिंग में कैसे फिल्टर करना है। और हम कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें देख के हायरिंग नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं क्विंट में हूँ, और हमारे यहाँ जो हायरिंग होती है वो ऐसे नहीं होती कि आपको किसी कास्ट से आप हैं तो इसलिए आपको हटा देंगे या नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा फीमेल कलीग्स हैं मेरी। ऑब्वियसली ये जेंडर को भी हमने ध्यान रखा, हम कास्ट को भी ध्यान में रखते हैं कि आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई बिहार के एक छोटे से गांव से आता है, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, डाइवर्सिटी में सिर्फ कास्ट ही नहीं है, डाइवर्सिटी का मतलब है कि आपको जो शहरों का डाइवर्सिटी भी देखना पड़ेगा, आपको देश के अलग अलग हिस्सों का डाइवर्सिटी भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ एक छोटे से गांव का कोई आकर काम कर सकता है या नहीं करता है, हमारे यहाँ किसी ऐसे सोसाइटी, ऐसे कल्चर से कोई आता है या नहीं आता है। क्यों हमें वो चाहिए? क्योंकि जब तक आपको अलग अलग कास्ट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के लोग नहीं होंगे, आपको न्यूज़ के बारे में समझ में नहीं आएगा। आप बहुत सारी चीज़ें गलत रिपोर्टिंग करेंगे, और वो हो रहा है। तो इसलिए भी ये ज़रूरत है कि हमें डाइवर्स सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पूरा एक वीक होता है डाइवर्सिटी के ऊपर। आपको उनकी एक वेबसाइट है जो डाइवर्सिटी के ऊपर होती है, और लोग अपने डाइवर्स कल्चर को प्रोमिनेंटली उस वेबसाइट पे लिखते हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं, वो प्रॉपरली बताते हैं कि मैं इस कल्चर से हूँ, मैं इस जगह से हूँ। हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं, ये गैप है। हम बताने से चूकते हैं, बताने से डरते हैं कि अरे अवॉइड करते हैं। अगर कोई मतलब आप ऐसे समझिए कि बिहार से कोई है, तो बिहार में अगर आप किसी से पूछिए कहाँ से हो, तो वो कोशिश करता बताएगा मैं पटना से हूँ। क्यों? क्योंकि पटना कैपिटल है। वो नहीं बताएगा आप किस गाँव से, उसको लगता है कि शायद आप उसको कम आंकेंगे। उसी तरह रिलीजन में है कि कई सारे लोग आपको, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मुझे अपने घर वालों से फ़ोन से बात, मैं स्टोरी पे होता हूँ, फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे अपने घर वालों को फ़ोन पे अस्सलाम वालेकुम बोलने में पहले 2 बार सोचना पड़ता है। मेरे साथ जो बैठा हुआ आदमी है वो कैसे रिएक्ट करेगा, आप जिससे इंटरव्यू करने गए हैं वो आपके बारे में क्या सोचेगा। तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मीडिया ने ही हमें वो चीज़ें सोसाइटी को दिखाई ही नहीं कि आपको हर कोई एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मीडिया का ही फ्लॉज आप कह सकते हैं। Okay, I'll move to Gunjan now. Gunjan, Google did a survey this year which was on gender diversity. Why did Google do that survey and what were the most important findings? Okay, so मेरे ये 10 साल के मीडिया एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और अभी गूगल के ज़रिए मैं काफ़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रही हूँ। और इस थ्रू आउट 10 साल 11 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ जो कंसिस्टेंट मैंने नोटिस करी वो ये थी कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी इशू है जो चलता ही जा रहा है। लाइक इसका आज के ज़माने में इसका होना इज़ समथिंग वी फील कि इट्स वेरी आउटडेटेड, राइट? इट शुडंट बी द केस। I'll give you a very recent example. Every year we do this Google News Summit, right? And it's a struggle to get women representation. Even after pushing, like, you know, if you see the audiences, not more than 16 or 17%, right? And to be honest, that was a trigger point for us and for my team, where we realized the fact that, you know, we need to validate these observations, right? That what we are seeing is the right thing or not. And that's where we thought that, you know, let's partner with some research company who can do this in-depth research and give us an ecosystem perspective, like, you know, that what we are observing is the right thing or not.
get the data insights and see that, what's like an issue, what are the numbers, right? Our intention for doing this research was just, see, as I think Shadab said, that, it's not a overnight thing, ke andar koi cheez badal jayegi. It takes time, right? So our intention was only that we present the numbers so that the ecosystem को पता लगे कि where we are standing, and they should acknowledge it at least. I think किसी भी problem को solve करने के पहले उसको acknowledge करना बहुत ज़रूरी है. So our intention was just to show the data insights, where we are standing, and then probably start working towards it. For each organization has a different perspective, right? Like different requirements. So that was the idea. What did the numbers show? What did the survey actually find? What was the... So to be honest, couple of numbers were not surprising. Like if you see, I'll just say couple, like 2 or 3, which was really which really struck me. One was which was not surprising, that the overall representation of women is 28%, but if you see the digital media, it's 43%. So I want to say something there. But digital media always has a higher representation because women like me just come out and make their own organizations. Yes. Would somebody have made me an editor of their own organization? No. I just started my own. That's why the number is higher. Exactly. Higher. And Meena is another example, right? True, absolutely. So, I mean, I think with digital natives and the digital first organizations, and this is my own perspective, I think you have that startup kind of a feel where you feel that, you have a different opinion, the start point, the way of thinking, right? And that is very well shown. That's what you're setting the examples, right? So when I saw the overall numbers, 28% was not surprising, but of course I knew that This is leadership or no, this is overall. Overall, okay. Overall. The most striking part, which for me is the biggest issue when I see myself now at a middle level of my career, was that the report says there is around 37 to 38% of women representation at the entry level. But as they start to go on the ladder, right, leadership numbers, C-suite levels is like 10%, 12%. That was a striking point. That was was alarming for me, considering the fact that I think there's no issue with the talent pool. That's why women are coming. Just that I think as a industry, we are not able to nurture their career paths, right? And that's the reason they're not able to go there. Maybe there's lack of training, lack of role models, social biases, various other reasons, right? And so that was really, really alarming for me as when I see it from the outside, right? And the second most important thing that really struck me, that we surveyed around 500 plus employees there, and 75% of women strongly voiced their issues regarding, they felt there are inclusive, excluding policies. They feel discriminated. They feel there are lack of role models, right? So women are voicing it out, right? But I think we are not acknowledging it and we are not doing anything about it, right? So on the business side, if you see on the workforce, along with the content side, I think if you start accepting the fact and start helping them to nurture their career path, I think the situation will be very different. Okay. So 2 points from what Gunjan said. One is that at entry level, you said there are almost 38% women. 38%. Yeah, 30%. And then when it goes up, it becomes 10%. Only 10% of those women become leaders. And remember, of this 10%, Dalit, Muslim women, queer women do not find as much opportunity as Savarna women. So the intersectionality will, when you look at those numbers, it will be way worse. So I want to ask Ankur that, look, we all speak about diversity. Every panel we can come and speak about diversity. But once we have people joining these organizations, how conducive are the environments in these organizations? Simple thing what Gunjan said about policies. I know a particular media organization which had a period leave. One of the biggest media organizations in the country had announced that they will give period leave. But they are not able, the women there are not able to take period leave because others will make fun in the newsroom. They'll say, aha, these are your 2 days, you have gone off. So in the newsroom, journalists do not take period leave. Even if you have policies, I don't think people focus on implementing those or creating conducive environments. Ankur? Yeah, I mean, I absolutely agree with that. And the reason why you started News Minute, why Meena started Mook Nayak, and why I started Queerbeat are actually the same. Because really there is no representation for us. And for queer communities especially, the space is not safe. I won't say that there are no queer people in the news or organizations. The space is not safe for us to come out, to be seen, to be visible. And
a lot of times I have heard from people from my own community is that if they don't see a representation, a queer representation at the top level, there is a lot of hesitation in even doing the stories of the community, because you feel like that I am not out. If I do this story, I'll be immediately labeled. The space is anyway not safe. So there is just a lot of you're second guessing constantly whether to say this, whether to do this story or not. One important thing that happens if there are diverse people at the leadership positions, I'll just speak about queer people, is that if there is a young reporter who has come up with a story about the queer community and is unsure, the story is half-baked. There are lots of doubts. If there is a queer person, editor at the leadership level, the person, young person will feel very encouraged, very safe in reaching out and say that this is the story I'm thinking of, can you help me? And the person at the leadership level would also be able to help and say and speak to the other people at the leadership level, this is why this story is important, this is why it should be on the front page and not at the back pages, let's not kill it. So we also at the leadership level be mindful that all of us have blind spots. Even if we think that we are good, progressive, all understanding journalists at the leadership level, we still have blind spots. We still won't be able to catch stories. So to support people and help them rise up, we need to create safe spaces. And safe spaces, again, would be created when you have diverse representation at the leadership level. Like I said earlier, the cultures are sustained from the top. I'll give you a very small example why I started Queerbeat. I did a small survey, and just to sort of validate my own hypothesis is that when I was reading news about the LGBTQ community in mainstream media, it's just an event-based coverage. This is what we saw with the marriage equality judgment. Everybody covered it because it was a Supreme Court news. If there's a Pride Month, June, everybody talks about it. But other than that, you will completely forget stories of queer people, or you will do lazy reporting about two gay men in a relationship, two lesbian women in a relationship. There is no diversity of stories. The LGBTQ community is extremely diverse. It's intersectional. An issue of Bahujan queer women looking for mental health space is different when a lesbian upper caste woman looking for a mental health support. So all these is what's happening to older queer people. Nobody is talking about it. And when we did the survey and asked that do queer people see diversity of their community in the stories that mainstream media is doing, over 80% people said that they do not see diversity of their issues reflected in the mainstream media, which is the reason why I had to start. Okay. We'll just move to 3 questions from the audience and then we'll wrap up the session. I'll just quickly say one thing. What Ankur said sounds very good, but I can tell you the conversations of creating safe spaces are not even happening within most of the mainstream media. Yes, we'll take quickly 2 or 3. Yes, please. Hello, good morning. My name is Shaurya. I'm from JNU CPS. My question to you is, I would like to first of all appreciate News Laundry and Media Rumble for having sign language interpreter. It is a very good initiative. Generally, I don't see any representation or any concern for persons with disability. My question to you is, does the question of diversity go beyond the newsroom, like to sensitize people with needs, like in university curriculums? Like in the training for being a journalist, does these issues should reflect in the curriculum also? What are the needs of persons with disability? What are the needs of different communities? बिल्कुल ये लास्ट ईयर भी यही सवाल आया था और ये हमारी कमी है कि अभी हमें भी बहुत सारी कमियां हैं और हम लोग सीखने के अभी रास्ते पे हैं, तो हमें भी जो डिसेबल हैं उनको भी रखना पड़ेगा न्यूज़ रूम में, ताकि उनकी भी खबरें हैं, उनकी भी दर्द है, उनको भी जो है शामिल किया जाए, तभी तो डाइवर्सिटी पूरी होगी। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पे इतने सारे कल्चर हैं, इतनी सारी जातें हैं, इतने सारे धर्म हैं और सब चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब
क्या नहीं है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी है, यहाँ पे डिसेबल भी हैं, और यहाँ पे क्वेयर भी है, यहाँ पे जाति धर्म सब कुछ है। तो आपको सबको शामिल करना पड़ेगा, तभी उनकी आवाज़ें आ पाएंगी, तभी उनके दर्द आ पाएंगे, तभी उनकी स्टोरीज आ पाएंगी, ताकि अंकुर को ये ना कहना पड़े कि जो है हमें सिर्फ तब याद रखा जाता है जब हमारे कोई इवेंट्स होते हैं। But Shadab, he's also asking whether this should be part of curriculums itself. That it's not just when people come to the newsroom, but it has to be part of curriculums of what you teach students. बिल्कुल। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाता हूँ, तो हमने नोटिस किया है, वो मुझे लगता है मैं शायद पहली बार इस तरह से नोटिस कर पाया, ये मेरी भी कमी है, सॉरी। हम सब हाँ, तो क्योंकि लिए हमने अपने कॉलेज के टाइम से भी हम रैंप बने इस कॉलेज में, ताकि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, यहीं तक हम सोच पाए। और मैं भी इसका कसूरवार हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा नहीं सोचा कि रैंप से आगे कि हाँ रेलवे स्टेशन पे रैंप होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए हर जगह, लेकिन न्यूज़ रूम में के बारे में नहीं सोच पाया। लेकिन अब मेरी कोशिश ये होगी, जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाऊँगा, किसी कॉलेज में पढ़ाने जाऊँगा, खास करके मीडिया के स्टूडेंट को, तो आई विल ट्राई कि मैं उनको इस तरह से भी समझा सकूँ, और ख़ास करके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी ये डिस्कस कर सकूँ कि हाँ बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा किया जाए कि जिसमें कास्ट, रिलीजन, ये सब तो हो ही साथ में, लेकिन साथ में डिसेबल्ड फ्रेंडली चीज़ें और उनके लिए भी एक रास्ता खुले, इसके ऊपर मैं बात करूँगा, मेरी कोशिश होगी ये। थैंक यू सो मच बताने के लिए आप। Yes, please. Yeah. It is in continuation of what the first question was. The thing is, we have a Marrakesh Treaty. I am from a legal background. उसकी compliance करने के लिए वो रैंप बने हैं। उसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो चीज़ें फॉलो होनी थी वो डंडे में फॉलो हुई हैं, वो इन स्पिरिट हम लोगों ने एंथुजियास्टिक होकर फॉलो नहीं करी हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया एज इट मिरर्स द सोसाइटी, कि हम उसको एंथुजियाज्म लाए कि हमें कुछ करना है। No, you're completely right in pointing out that media has in many ways failed in talking about these issues and in instilling the spirit that it's just not lip service. I think this can happen by us becoming more diverse and really telling stories that are about the spirit of inclusivity, diversity, and equity, showing it through the characters, showing it through the experiences of people in our stories, that what is it exactly they face, what are the complexities that exist, and go beyond just thinking about a ramp. No, so before I move to the next question, to quickly answer you, the media is also microcosm of society, right? Who is in the media are people among us. So if those people are not sensitive, then those stories are not covered that way. For example, let's take the Me Too movement. Why did a lot of mainstream media in India not cover it? Because their newsrooms are full of harassers, right? Therefore, there are a lot of examples like that. The point is, we don't hold a mirror to society simply because we are part of society, and that mirror will be held against us too. So we don't want to hold that mirror in our hands. Yeah, next question. Yes. I just want to take from where Ankur said that they lose the audience. You know, when you don't have diversity, then you lose your audience. I think you don't really lose the audience. I was in Arunachal last year, and it was so frightening that the only television in a lot of places that you see has channels like Times Now or Republic. So I think it's not that you lose that audience. I think it becomes captive to very, very wrong kind of fake news. So in fact, it works double. So not only have you lost the audience, you have also strengthened the state to come down upon you, which we are seeing. So I think the reason is not just to get more audience, but the reason is for you to strengthen yourself so that tomorrow when the state comes down on you, which it is right now, you have to be strong enough with a base, which is not like what we just saw. It got bought off. Because for 30 years, it just sat back lazily saying, oh, we're the good guys because we're not doing what they are doing. But unfortunately, they were also not doing what they should have been doing, which is gathering a better audience. So I think it's really important. Gunjan, is that a business case that you lose your audience plus somebody else gains it who shouldn't? So, I mean, again, if I put up a Google lens here, right? Google is a company where diversity, equity, inclusion is a very, very active value, right? We enable it, we practice it, and we invest in it, right? Because
our mission is what? Our mission is basically that we wanted to organize all the information so that it is accessible to all. Now, when you creating such inclusive products, you need to have that sort of a audience also and workforce also who basically educates you, right? You know, that what sort of a product you should be building so that it is accessible to all. So in terms of making sure that you know your consumer needs, you ensure that you know how you are building your products are inclusive. That's why it's very, very important for Google to have a fair representation. And as a company, like, you know, from my experience in last 5 years, I think it's a company with a vision which get revised every year, right? So we have a data-driven approach in terms of seeing that, you know, how we are represented, like how we have been representative in our workforces, and also ensuring a culture of transparency and trust. So within the employees as well, right? That keeps up the leadership always like on a checkpoint that, you know, what we are seeing is actually making sure that internally also we are diverse and externally also we are creating products which are diverse, right? And which is making sure that the entire digital society is like, could use it all together, right? Yeah. मैं ऐड ही करना चाहता था, मैं खुद भी एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ और मैं ये कहना चाहता था कि हम भी जो है एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, पर हम उतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, रिप्रेजेंटेड नहीं है मीडिया में। वही बात है कि डाइवर्सिटी नहीं है। आप सब लोग हैं, जैसे मुस्लिम भी आ गए हैं, दलित भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है ना? तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मीडिया है वो मैंने महसूस किया है कि वो हमें तब कवर करता है जब हमारे में से कोई इंस्पिरेशन ढूंढता है। तो हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इंस्पिरेशनल से कहीं ज़्यादा हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी साधारण हैं, है ना? तो वो जो नॉर्मलिटी है हमारी लाइफ्स की वो पेश नहीं होती है। तो इसके बारे में मतलब क्या टाइम आ गया है कि डिसेबल्ड लोगों को भी मूक नायक की तरह या दूसरे की तरह एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहिए? I would like to add that the media covers not just inspirational, but when there's a tragedy. I think it's either inspiration or it should be a tragedy. You have anything to add, Shadab or Ankur? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ मतलब इंस्पिरेशन ही नहीं ढूंढ रहे होते हैं, जैसे धनिया ने बताया कि हम लोग ट्रेजेडी भी ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे याद है कि जब हम आज से 5-6 साल पहले एक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, तो वहाँ डिसेबल्ड और पूरा कम्युनिटी एक है, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ अभी उनका, तो वो आए हुए थे वहाँ पे और उनको कवर करने वाला कोई नहीं था। बेसिकली उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको किसी नेताओं ने व्हील चेयर का वादा किया था, बट उनको कवरेज नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि लिए हम उस तरह से सोच ही नहीं रहे। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम लोगों को भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और बिल्कुल पूरी कोशिश होगी। और यहाँ से मैं भी ये सीख के जा रहा हूँ कि हमें भी किस तरह से और ज़्यादा अपने अंदर मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है समाज, सोसाइटी, सबको। The person next to red shirt, the blue shirt, I think. Thank you for the opportunity. The question here is, the people belonging to the periphery, they have been failed by the state itself. If the state isn't able to cater to everyone, it's a state's failure in a sense. So in such a case, when businesses are expected to hire such people who may not be skilled enough, which is due to the failure of the state, don't you think it poses an unfair burden upon such businesses to take a step which inherently states that they have to carry upon the responsibility of the state's failure on their own shoulder in order to cater this? I have strong views on this, but yes. Danya, you No, go ahead. you add. I was just quick. Yes, the state has failed, but of course, but it is the responsibility of businesses to create opportunities. And I'll just talk about the leadership thing. And somebody said earlier that when you're looking for diverse people, they are generally hired at the lower level. You can create leadership training, leadership opportunities at the top level too, and get people there. And it is our responsibility. It's not anything unfair. If the state has failed you, we need to step up and do this. Yeah. Yeah. So I'll just end by saying the state has failed us in many ways. In many years, the state is communal. Should we be then saying that we will bear the brunt of it? The
the state says there is no hunger in this country, that I missed my breakfast and I'm on the flight and I land and then I'm sorry, I'm hungry. There's no hunger index in the country. Should we fail? I mean, we have a culture in our country where private organizations, NGOs, individuals, students, activists have forever led, including private businesses, right? They forever stepped in where the state has failed. Unfortunately, we have to also show a mirror to the state. And journalism is one profession where I can't say I'm running a private business and if the state has failed, I will also fail. Because this is not just a profession. For a lot of us, it's a calling. It's not even a passion, it's a calling. And for that, we have to step up and we can't say the state has failed. So I will, of course, talk to you after the session too. Thank you very much, everyone. And I sincerely hope that once more, when we all come together for such sessions, that Oxfam survey will at least see some results forward. Because every year I'm tired. Like I look at the survey, I think, okay, there's not much progress, right? So I'm hoping there'll be one session where Meena will not have to be so emotionally charged and the numbers actually become better. And I hope we all thrive towards it. Thank you very much. Thank you.